अगर आप ये सोच रहे हैं कि पावर कट या पावर फेलियर होने की सूरत में एक्वेरियम में ऑक्सीजन कैसे ऐड करें, क्योंकि अगर ऑक्सीजन ऐड नहीं हुई तो मेरी फिशेस डेड हो सकती हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि मैं इस वीडियो में डीसी पंप पे बात करूंगा। अगर डीसी पंप आप परचेज करेंगे तो उसकी कॉस्ट काफी ज्यादा होगी, लेकिन अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो आप इजीली अपने घर में किसी भी पंप को मॉडिफाई कर सकते हैं, एसी पंप से डीसी कन्वर्ट कर सकते हैं। वेरी इजी, वेरी क्विक, विद इन 3 और 4 मिनट इसकी सारी डिटेल मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। और लास्ट में एक बोनस पॉइंट, क्योंकि इस पंप से एक एक्स्ट्रा बेनिफिट भी मिलेगा जो कोई भी मेरा फ्रेंड फ्यूचर में यूज कर सकता है। स्टार्ट में मैंने एक्स्ट्रा बोनस पॉइंट की बात की थी। इस पंप को मैं ट्रांसपोर्टेशन में भी यूज कर सकता हूँ। ये मैंने पंप कनेक्ट किया कार में और 6-7 आवर की ड्राइव की और थैंक्स गॉड ऑल फिशेज आर ओके। ऑक्सीजन प्रॉपर ऐड होती रही, कोई फिश डेड नहीं हुई। हेलो फ्रेंड्स, मैंने अपने टैंक की पावर ऑफ की है ये चेक करने के लिए कि पावर कट के केस में जब एयर पंप ऑफ होगा तो वाटर में ऑक्सीजन कैसे ऐड करेंगे। उसके लिए मैंने ये 12 वोल्ट का डीसी पंप लगाया है 8 वाट का। इसकी बैक साइड पे ये स्पंज भी रखेंगे ताकि जो वाइब्रेशन होगी इसकी वो ग्लास पे इफेक्ट ना करे। जैसे मुझे नजर आ रहा है बैक साइड पे इसके फोम लाजमी रखूंगा मैं, और अप साइड से पाइप करके ड्रॉप कर दिया इधर, और एंड में थोड़ा सा क्लोज करेंगे ताकि वाटर में थोड़ा सा प्रेशर बने। और यहाँ पे हम देखेंगे तो मैक्सिमम बबल बन रहे हैं। ये पंप बैटरी से चल रहा है, उसके लिए ये बैटरी एक लगी हुई है 12 वोल्ट की, 7 ट्रांसफार्मर जो उस बैटरी को चार्ज करेगा, और एक ये कंट्रोलर ये लाजमी लगाएंगे जो बैटरी चार्ज होने के बाद उसको कट ऑफ करेगा, अदरवाइज बैटरी डैमेज हो सकती है, उसका वाटर बॉयल हो सकता है। मेरे टैंक की लाइट्स भी 12 वोल्ट की हैं, इसलिए वो भी इसी बैटरी पे चल रही हैं। इसकी डिटेल्ड वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में पेश करूंगा, कोई भी मेरा फ्रेंड वहां से देख सकता है कि ट्रांसफार्मर को, बैटरी को और इस कंट्रोलर को कैसे कनेक्ट करेंगे और इस पंप का कनेक्शन कैसे होगा जो पावर फेलियर के केस में ये ऑन होगा और जैसे ही पावर आएगी ये ऑफ हो जाएगा। आई होप ये वीडियो किसी दोस्त की हेल्प करेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय। एक्वेरियम एयर पंप किसी भी फिश टैंक का हार्ट है। अगर एयर पंप नहीं होगा तो उसमें ऑक्सीजन ऐड नहीं होगी और मेरी फिशेस डेड हो जाएंगी। लेकिन इस एयर पंप को चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, पावर चाहिए। अगर पावर फेलियर हुआ तो फिर एयर पंप नहीं चलेगा
और फिर प्रॉब्लम स्टार्ट। इस वीडियो में मैं 2 सॉल्यूशंस बताऊंगा। सॉल्यूशन 1 में एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है, बोनस पॉइंट, और सॉल्यूशन 2 जो कि मेरे इस 90 गैलन टैंक में अभी भी यूज हो रहा है और मेरे किसी भी फ्रेंड ने पहले वो नहीं देखा होगा। तो स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन 1 में एक डीसी पंप बनाया जा सकता है। इसी पंप को, कोई सा भी इनमें से पंप हो, उसको हम डीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके अंदर सेम ट्रांसफार्मर यूज होगा और एक स्मॉल सर्किट लगेगा और इसको मैं कन्वर्ट कर दूंगा डीसी में। इसकी डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड की हुई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में पेस्ट करूंगा, कोई भी मेरा फ्रेंड वहां से देख सकता है। अब इसमें बोनस पॉइंट ये है कि ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी यूज किया जा सकता है। मैंने इस पंप को अपनी कार में यूज किया और अराउंड 5-6 आवर ट्रैवलिंग के बाद, थैंक्स गॉड, ऑल फिशेस ओके, बकेट में कोई इश्यू नहीं हुआ, ऑक्सीजन प्रॉपर ऐड होती रही। और इसी पंप को मैं अपने टैंक पे भी लगा सकता हूं। उसके लिए मुझे 12 वोल्ट की बैटरी चाहिए होगी और ये प्रॉपर वर्क करेगा। इन केस ऑफ पावर फेलियर भी ऑक्सीजन ऐड होती रहेगी और मेरी फिशेस बिल्कुल बेस्ट रहेंगी। अब मैं सेकंड सॉल्यूशन पे बात करता हूं जो मेरे इस 90 गैलन टैंक में भी अभी यूज हो रहा है। ये डीसी 12 वोल्ट पंप, 8 वाट 12 वोल्ट डीसी, ये मैं इसके ऊपर कनेक्ट कर सकता हूं। जैसे ये मैंने कनेक्ट किया हुआ है, टॉप पे में नजर आ रहा है, ये लगा हुआ है। इससे एक पाइप मैंने लगा के अप साइड से गुजारा और उसको यहां पे टर्न करके ड्रॉप कर दिया। इसकी आउट को थोड़ा सा क्लोज किया ताकि वाटर में थोड़ा सा प्रेशर हो। अब जब पावर आ रही होगी तो ये पंप बंद होगा, जैसे ये अभी बंद है। जैसे ही पावर फेलियर होगी ये पंप चलेगा और यहां से वाटर उठाएगा और अप साइड से यहां ड्रॉप करेगा। उस प्रेशर से वाटर के ड्रॉप होने से एयर बबल्स बनेंगे और हमारी ऑक्सीजन ऐड हो जाएगी। इसके लिए मुझे एक 12 वोल्ट की डीसी बैटरी भी चाहिए। अगर हम इस साइड पे देखें, ये वो मैंने बैटरी लगाई हुई है 12 वोल्ट 55 एम्पेयर। ये कार की बैटरी है। इसकी जगह मोटरसाइकिल की बैटरी भी लगाई जा सकती है, 4 एम्पेयर या 5 एम्पेयर वाली। अगर मैं स्मॉल बैटरी लगाऊंगा तो उसका बैकअप टाइम बहुत कम होगा। ये नियर अबाउट 5-6 आवर भी अगर इलेक्ट्रिसिटी फेलियर होगा तो वर्क करेगी, डिस्चार्ज नहीं होगी। साथ एक ये ट्रांसफार्मर लगेगा 6 एम्पेयर का और एक चार्जिंग सर्किट कंट्रोलर, ये लाजमी चाहिए ताकि बैटरी को चार्ज किया जाए। ये इसकी डिटेल्ड सर्किट है जिसमें कंप्लीट देखा जा सकता है कि ये कैसे कनेक्ट करेंगे और ये कैसे वर्क करेगा। अब अगर यहाँ पे मैं चेक करने के लिए पावर ऑफ करूं, इस टाइम पावर आ रही है इसीलिए ये लाइट ऑन है, चार्जिंग लाइट ट्रांसफार्मर के ऊपर। ये मैं पावर ऑफ कर लेता हूं। ये मैंने ऑफ कर दी लाइट और ये वो पंप ऑन हो गया। फ्रंट साइड से अगर हम देखें, ये एयर बबल्स ऐड हो रहे हैं इसमें। और यहाँ पे सेकंड जो बेनिफिट है, वाटर में थोड़ी सी सर्कुलेशन भी हो रही है क्योंकि ये पंप इस साइड से वाटर इन कर रहा है और इस साइड ड्रॉप कर रहा है। वाटर में थोड़ी सी मूवमेंट भी रहेगी तो और ज्यादा बेस्ट होगा। अगर हम टॉप से देखें, ये एयर बबल्स बन रहे हैं जिनकी वजह से गैसेस एक्सचेंज हो रही हैं, CO2 गैस वेंट होगी और ऑक्सीजन वाटर में इन होगी। अब इन दोनों सॉल्यूशंस के लिए 12 वोल्ट बैटरी चाहिए जो कि मैंने साइड पे लगाई हुई है और साथ ट्रांसफार्मर लगाया हुआ है। इसी बैटरी को हम सोलर के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं कि वो डे में चार्ज हो जाए और नाइट में हम सॉल्यूशन 1 या सॉल्यूशन 2 कोई भी सॉल्यूशन करें उसके लिए यूज की जा सकती है इजीली। अब जैसे ही पावर आएगी ये मेरा पंप बंद हो जाएगा और नॉर्मल जो सिस्टम है वो चल पड़ेगा। इस टाइम ये सिस्टम बंद है क्योंकि मेरे पास इसमें फिशेज नहीं है। यहाँ पे मेरे पास जियो फिगस और इलेक्ट्रिक ब्लू अकारा फिशेज थी जो कि मैंने सेल आउट कर दी और अभी मैंने अफ्रीकन सिकलेट ऑर्डर की हुई है। जैसे ही वो आएंगी मे बी नेक्स्ट वीक में, तो मैं इसमें ऐड करके उसकी वीडियो अपलोड कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है उमैर सईद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल न्यू एक्वेरियम हॉबी। एक्वेरियम हॉबी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज एयर पंप है। एयर की वजह से वाटर में ऑक्सीजन ऐड होती है। अगर मैं यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड नहीं करूंगा तो मेरी ये फिशेस डेड हो जाएंगी। अब यहाँ पे अगर हम इस एयर पंप को देखें, इसके लेफ्ट साइड वाली नोजल में काफी ज्यादा एयर आ रही है और राइट साइड में मे बी 10% और 5% है। तो इसको आउटसाइड थ्रो करने की जरूरत नहीं है, न्यू परचेज करने की भी जरूरत नहीं है। कोई भी मेरा फ्रेंड इसको इजीली, वेरी इजी और लो कॉस्ट में घर में रिपेयर कर सकता है, बिल्कुल न्यू कर सकता है। पंप को ओपन करने के लिए स्मॉल स्क्रू ड्राइवर चाहिए, ये सीजर चाहिए, कटर और ये नोज प्लास। और मेरे पास जो पंप है वो SP780 इसका मॉडल है। कोई भी पंप हो सकता है, उसको इजीली ओपन किया जा सकता है। इसके स्क्रू मैंने ओपन कर लिए 4, ये पड़े हुए। अब अगर मैं इसको ओपन करूं, ये अब मैंने जब देखा था तो इस वाली साइड पे राइट में एयर कम थी, इसमें ठीक थी, इसमें एयर कम थी। अब हम इस वाली साइड को देखते हैं। इन साइड अगर हम देखें तो यहाँ पे ये 2 रबर्स लगी हैं,
जिनसे एयर प्रेशर बनता है। यहाँ पे मैग्नेट है, ये एक ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर के ऊपर जब एसी सप्लाई आएगी तो पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल बनते हैं। मैग्नेट वन साइड पे अट्रैक्ट होता है, वन साइड पे रिपेल होता है, तो उस वजह से फिर ये मूव करता है इस तरह, ऐसे। इसके मूव होने से हमें एयर बनती है, यहाँ पे प्रेशर बनता है और एयर आउट आ जाती है यहां से। अब अगर मैं इसको करूं, ये मूव हो रहा है, इसको मैं जैसे ही छोड़ूंगा ये वापस आ रहा है, फिर प्रेस किया फिर वापस आ रहा है। लेकिन इसे अगर हम देखें तो ये मूव नहीं हो रहा, ये स्टक कर गया यहाँ पे। इसका मतलब है इसकी ये जो रबड़ है ये डैमेज हो गई है, यहाँ से वो मूव ही नहीं होने दे रही। इस वजह से इस साइड पे एयर बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। डिफरेंट पंप के डिफरेंट साइज होंगे। जो मेरे पास पंप है उसकी मैं रबड़ को ओपन करूंगा और उसको फिर मार्केट में ले जाऊंगा, ले जाके चेक करके मेजर करके उसके साथ की न्यू ले आऊंगा। और अगर मैं ऑलरेडी काफी ज्यादा लेके आता हूँ जैसे मैंने रखी हुई है, तो जो किड्स को हम पाउडर लगाते हैं किड्स वगैरह की बॉडी पे, वो पाउडर इस एनवेलप में डालेंगे और उसमें ये रबड़ रख देंगे। अदरवाइज अगर ये ऐसे ही मैं रखूंगा जैसे ये पड़ी है बिल्कुल पाउडर के बगैर, तो ये में भी आफ्टर 2 मंथ जो है डैमेज हो जाए, इसके अंदर वो क्रैक्स आ जाएंगे और मे भी थोड़ी थोड़ी सी वेट होने लग जाए और फिर ये फ्यूचर में वर्क नहीं करेगी। इस तरह इसको रखेंगे तो फिर ये मे बी 6 मंथ 1 ईयर भी अगर पड़ी रहेंगी तो कोई इशू नहीं है, ड्राई रहेंगी। जैसे ही इनको निकालूंगा इनको इस तरह क्लीन करेंगे, क्लीन करने के बाद इसमें फिट कर देंगे। इसको मैंने बाहर निकाल लिया है। यहाँ पे एक पॉइंट है कि ये भी टाइट हो सकता है। अगर हम इसको देखें, इसने मूव होना है, अगर ये इधर से भी टाइट होगा तो फिर भी ये मूव नहीं होगा। इसको मैंने चेक कर लिया, ये बिल्कुल ठीक है। उसके बाद इसको मैंने प्रेस किया तो ये बिल्कुल मूव नहीं हो रहा, स्टक हुआ है। अब हम इसको ओपन कर लेंगे यहाँ से ऐसे, और जो रबर्स मेरे पास नहीं उनमें से मैंने रबड़ देखी जो इसके साइज पे आए बिल्कुल बराबर इस तरह। एक ये पॉइंट साइज बराबर है और दूसरा ये जो न्यू रबड़ है इसको मैं इस पे लगा के देख लूंगा, वो इस पे टाइट लगनी चाहिए। यहाँ पे लॉक होगी एयर टाइट, फिर इधर से एयर बाहर नहीं आएगी, यहाँ से जो प्रेशर बनेगा वो इधर से बाहर जाएगा। ये रबड़ फाइनल हो गई। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है, इसमें वाल भी होते हैं। वाल जो एयर प्रेशर को एक साइड से इन होने देते हैं और एक साइड से आउट होने देते हैं, ये वो वाल है। इस रबड़ को हम निकालेंगे स्क्रू ड्राइवर से, वेरी केयरफुल, स्लोली करेंगे ताकि ये इधर ही रहे, कहीं दूर ना रहे। और उसके बाद इसको मैं ऐसे मूव करूंगा, ये भी स्टक हो जाता है। ये ब्लैक कलर का जो है कार्बन, ये इस रबड़ से निकल के इसके ऊपर लग गया हुआ है सारा। इसको ओपन करेंगे, ये ओपन हो गया। ये वो वाल है, बिल्कुल प्लास्टिक का स्मॉल पीस है और इसमें कोई चीज नहीं है। अगर ये ब्रेक भी हो जाए तो कोई भी प्लास्टिक, जरा सा हार्ड प्लास्टिक लेके उसको कट करके लगाया जा सकता है। जैसे ये प्लास्टिक है, इसका पीस भी लगाया जा सकता है, बिल्कुल स्मॉल सा। अब इसको मैं टिश्यू से क्लीन करूंगा। ये सारा कार्बन निकला है जो इस रबड़ में से निकलता है। जब ये रबड़ मूव करती है आगे पीछे तो टाइम के साथ इससे ये रबड़ी पाउडर बनती है और वो यहाँ पे लग जाती है। अब ये दूसरा भी मैं इसी तरह वाल ओपन करूंगा, इसकी रबड़ को निकाल लूंगा केयरफुल, स्लो, ये रख दिया और इसका ये भी निकाल लेंगे बाहर। ये आ गया, ये बिल्कुल स्मॉल पीस है, बिल्कुल एक प्लास्टिक का। इसको भी टिश्यू से क्लीन कर लूंगा। और उसके बाद अगर हम इस जगह को देखें, यहाँ पे भी ये ब्लैक है, ये मैंने इसको क्लीन करने की कोशिश की है इस साइड से टिश्यू से, लेकिन ये नहीं हो रही। तो अब मैं ये यूज कर सकता हूँ स्पिरिट या पेट्रोल भी लिया जा सकता है थोड़ा सा। इसको इस पे लगाएंगे टिश्यू पे और इसको क्लीन कर लेंगे। ये रबड़ मैंने साइड पे कर लेनी है ताकि रबड़ को ये स्पिरिट या पेट्रोल ना लगे। सिर्फ इस प्लास्टिक के ऊपर हम इसको लगा सकते हैं। इसको हम वाल कहते हैं। ये प्लास्टिक की शीट हो सकती है, जैसे ये प्लास्टिक है, थोड़ा सा हार्ड प्लास्टिक। इसकी एक साइड थोड़ी सी बड़ी है, एक साइड छोटी है। अब इसको भी मैंने क्लीन कर लिया है। इसको मैं यहाँ पे लगाऊंगा। जो ये राउंड बना हुआ है बड़ी साइड, उस साइड आएगी ऐसे। स्क्रू ड्राइवर से इसको स्लोली इस तरह प्रेस कर देंगे ऐसे। राउंड साइड यहाँ आएगी बड़ी और स्मॉल साइड इधर आएगी इस होल के ऊपर। और जो हमारा ये रबड़ का लॉक है ये इसके ऊपर ऐसे लग जाएगा लॉक, इस तरह। अब ये मूव करेगा अप डाउन इसकी मूवमेंट के साथ। ये जो रबड़ है, जब ये रबड़ ऐसे प्रेस करती है तो फिर ये
प्लास्टिक जो है मूव करता है अप डाउन और फिर एयर का फ्लो बनता है। ये जो है ये इसका जो ओरिजिनल था वो डैमेज हो गया था, तो मैंने ये पेपर की शीट में से पीस निकाला है। इसको भी उसी तरह ही एक साइड से बड़ा होगा, एक साइड से छोटा होगा, ये इसमें लगा देंगे। सेंटर में स्क्रू ड्राइवर से इसको प्रेस कर लिया ये, और फिर ये लॉक इसके ऊपर लगा देना है रबड़ का। बस इसका काम खत्म। ये भी क्लीन, ये भी क्लीन, ये भी क्लीन हो गया, ये भी क्लीन हो गया। ये रबड़ अब न्यू इसके साथ जोड़ेंगे स्क्रू खोल के। ये टाइट हो गया इसके ऊपर, इसको अब मैं इसके ऊपर लगा दूंगा। इधर भी ये टाइट लगेगा लॉक। और इसके बैक साइड पे एक ये रबड़ थी ये वाली, ये इसमें एक कट बना हुआ है, इसको भी जरा क्लीन कर लेते हैं। ये जो कट बना हुआ है इस जगह पे ये कट आएगा ऐसे। अब अगर मैं इसको मूव करूं, ये प्रेस किया ये बैक आ गया, ये प्रेस किया ये बैक आ गया। जैसे ये आ रहा है इसको प्रेस करेंगे ये बैक आ जाएगा, ये प्रेस करेंगे ये बैक आएगा। मैग्नेट आपस में टकरा रहे हैं, पहले इनको जरा ठीक कर लेते हैं। ये मैग्नेट आपस में टकरा रहे थे, ये जब ऐसे मूव कर रहा था यहाँ पे इस जगह पे ये आपस में टकरा रहे थे जिससे नॉइज बन रही थी। तो अब ये बिल्कुल स्ट्रेट होने की वजह से बैक पे लग रहे थे। मैंने थोड़ा सा इसको इधर टर्न किया है, थोड़ा सा इसको इधर टर्न किया। अब अगर मैं इसको चलाऊं, अब ये नॉइज नहीं आ रही जो टिक 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 हमें सुन रही थी। और अब अगर मैं इसके आगे हाथ रखूंगा, ये बैक प्रेशर बन रहा है इसके ऊपर। इट मीन्स के वॉल भी ठीक है और एयर भी ठीक है। अगर नहीं होगी कोई भी एक चीज खराब होगी तो बैक प्रेशर नहीं बनेगा फिर यहाँ। और इसी तरह इसका भी है, इसको मैंने भी चेंज नहीं किया, ये वर्क कर रहा है, लेकिन इसको भी चेंज करना है। अदरवाइज आफ्टर 2 वीक्स ये भी प्रॉब्लम करेगा और फिर मुझे इसको ओपन करना पड़ेगा। इसलिए वन टाइम कंप्लीट क्लीनिंग और ओवरहॉलिंग करनी चाहिए ताकि फ्यूचर में ये सेम टाइम पे आफ्टर 6 मंथ और आफ्टर 1 ईयर दोबारा रिपेयर किया जाए। ये हो गया। अब इसको यहाँ से थोड़ा सा प्रेस कर लिया। अब मूव करके देखते हैं, ये बैक आ रहा है, इसको बैक आना चाहिए। अगर ये बैक नहीं आएगा तो फिर ये खराब है। ये यहाँ से मैंने प्रेस किया और फिर ये बैक आ गया। अब इसको ऑन करते हैं, ये आ गया। अब मैं इसके आगे हाथ रखूंगा, ये बैक प्रेशर बन रहा है, ये इसका बैक प्रेशर बन रहा है। ओके, अब ये मैंने पंप को बंद कर दिया है और दोबारा यहाँ पे लगाया तो राइट और लेफ्ट बोथ लाइंस ऑलमोस्ट इक्वल हैं और थैंक्स गॉड ये बेस्ट वर्किंग कर रहा है। आई होप ये वीडियो किसी दोस्त की हेल्प करेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, ये मेरा 90 गैलन का टैंक है और इसमें मेरे पास 80 ग्लो टेट्रा फिशेज हैं। किसी भी टैंक में या एक्वेरियम हॉबी में सबसे ज्यादा जरूरी चीज एयर पंप है। अभी मैं 2 पॉइंट्स डिस्कस करूंगा। फर्स्ट पॉइंट कि एयर पंप डैमेज क्यों होता है, और सेकंड पॉइंट कि एयर पंप के साथ एनआरवी जरूरी है लगाना या नहीं। एनआरवी जिसको हम चेक वाल भी कहते हैं, ये है वो चेक वाल। अगर ये जरूरी है तो इसकी रीजन क्या है। अगर मैं अपने टैंक पे बात करूं, मेरे टैंक में 2 एयर पंप्स लगे हुए हैं। अगर मैं इसका क्लोज व्यू कराऊं, ये
चैंपियन का 5.3 वाट का पंप है, एक ये लगा हुआ है और एक ये बैक साइड पे लगा हुआ है। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि मैंने 2 क्यों यूज किए हैं, उसके बेनिफिट क्या हैं। फर्स्ट बेनिफिट तो ये कि आपके पास स्टैंड बाई में रहेगा, इन केस अगर एक डैमेज हो तो सेकंड चल रहा होगा, इसलिए मेरे पास इतना क्रिटिकल सिचुएशन नहीं होगी, ऑक्सीजन का प्रॉब्लम नहीं होगा। और सेकंड 2 होने की वजह से मैंने इनको 50% स्पीड पे चलाया हुआ है। अगर हम इसकी नाप को देखें, ये इसकी नाप का पॉइंट है, ये 50% पे है। यहाँ पे ये मिनिमम पे होगा स्पीड, इस जगह ये मैक्सिमम पे होगा, और मैं इसको 50% पे रखता हूं। ये भी 50% पे और ये भी 50% पे, दोनों 50% पे होने की वजह से इनके ऊपर लोड कम होगा और ये फिर इनकी रबड़ जो है वो लॉन्ग टर्म चलेगी। जैसे ये 4 इयर्स हो गए और उसमें ये नियर अबाउट 15 मंथ और 16 मंथ के बाद मैंने रिप्लेस की इसकी रबड़, और 24/7 चलते हैं ये। सिर्फ फीड डालने के टाइम पे मैं इसको ऑफ करता हूँ और बाकी ये पूरा दिन चलते रहते हैं। और वाटर में ऑक्सीजन यहाँ पे ऐड नहीं होती जहां ये मैंने बार लगाई हुई है, ये सिर्फ लुक अच्छी लगती है। आप अगर फार से लुक देखेंगे, इसकी भी लुक देखें, ये जो बाहर आ रही है इससे एयर जरा लुक अच्छी लग रही है। ऑक्सीजन ऐड या गैसेस एक्सचेंज टॉप पे होती है जहां पे ये बबल्स बनते हैं, ये जो सरफेस एजिटेशन इसको हम कहते हैं, जो ये मूवमेंट होती है वाटर में, जिस तरह रिवर्स में या सी में। बॉटम में तो एयर ऐड नहीं होती कहीं भी, सी में टॉप सरफेस जो है उसमें मूवमेंट होती है। अगर मैं इसको यहाँ पे ऑफ कर दूं, ये जैसे मैंने ऑफ किया है, अब यहाँ पे ये स्टेशनरी हो गई है। स्टेशनरी अगर होगी तो अब यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज नहीं होंगी, इसलिए एयर की वजह से जो टॉप सरफेस है उसमें मूवमेंट रहती है, बबल्स जो ब्रेक होते हैं उसकी वजह से फिर आपकी गैसेस एक्सचेंज होती हैं और उसमें ऑक्सीजन ऐड होती है और CO2 गैस वेंट होती है। अब ये 2 पंप लगाना कंपलसरी नहीं है जिस तरह मैंने लगाया, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। अगर आप 2 लगाएंगे तो स्टैंड बाई ऑप्शन भी रहेगी, रिलायबिलिटी रहेगी, अगर एक डैमेज होगा तो सेकंड चल रहा होगा, और दूसरा लाइफ इंक्रीज हो जाएगी पंप की। अब मैं बात करूंगा कि पंप डैमेज क्यों होता है। उसके लिए मैंने एक और पंप लगाया टेम्परेरी तौर पे, ये और ये इसकी मैंने 2 एयर स्टोन्स लगाए और दोनों को नियर अबाउट सेम डिस्टेंस पे रखा है, हाइट सेम है इनको 3 फीट पाइप मैंने लगाया जो लेंथ लगी है, और अभी ये चल रहा है। ये बिल्कुल बेस्ट लग रहा है कि इसमें कोई इशू नहीं है, बबल्स निकल रहे हैं इसमें से और वर्किंग प्रॉपर कर रहा है। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ पे ऑफ करूं पंप को, ये मैंने पंप को ऑफ कर दिया और ये मेरा स्टोन ऑफ हो गए। अब अगर हम देखें तो वाटर इस पाइप में आएगा, जो एयर का पाइप है उसमें वाटर फिल होगा क्योंकि एयर आनी बंद हो गई है। ये हमें नजर आ रहा है, इसमें ये वाटर आ रहा है, ये वाटर लेवल इंक्रीज हो रहा है, इसमें ये ऊपर जा रहा है, लेकिन इसमें नहीं आ रहा अभी, इसमें स्लो है ये। और अगर हम दूर फार करके देखें, ये देखें इसका यहाँ पे पहुंच गया काफी हाइट तक और ये अभी नीचे है, काफी डिफरेंस है। इसका मतलब है कि इसमें ज्यादा जल्दी पानी आ रहा है। अगर हम ये देखें, ये रेड वाला ज्यादा पानी आने का मतलब है कि इसके होल्स चोक नहीं हुए हुए, इसलिए इसमें वाटर क्विक इन हो रहा है, इसलिए वो वाटर यहां तक पहुंच गया फौरन अब तक। और दूसरा जो है ये ब्लू वाला, इसमें चोकिंग है, इस वजह से इसमें वाटर स्लो इन हो रहा है और वो भी यहां तक पहुंचा है। अब मेरे पाइप्स की लेंथ जितनी ज्यादा होगी उतना ही प्रॉब्लम ज्यादा होगा, क्योंकि मेरे ये जो लगे हुए हैं एयर बार लगी हुई है, ये स्पंज फिल्टर पे लगे हुए हैं और ये भी एयर बार, इनकी लेंथ 5 फीट के अराउंड होगी, इनसे लेंथ ज्यादा है जो मैंने भी टेस्ट के लिए लगाए। अब अगर मैं यहाँ पे ऑन करूं पंप को, तो अब फर्स्ट एयर को इस वाटर को आउट करना है पाइप में से और फिर एयर निकलेगी। जैसे ही वाटर आउट होगा तो यहां से बबल्स बनना शुरू हो जाएंगे और जितनी देर तक वाटर फुल स्पीड से नहीं निकलेगा बबल्स नहीं बनेंगे। अब अगर मैं यहाँ पे ऑन करूं तो जैसे ही मैं पंप को ऑन करूं क्विक एयर निकलनी चाहिए यहाँ पे। अगर क्विकली एयर नहीं निकलती तो इसका मतलब है कि वो वाली साइड का स्टोन या जो भी चीज आगे उसमें चोकिंग है और वो बैक पंप पे प्रेशर डाल रही है और उसकी वजह से उसकी रबर डैमेज होगी, पंप डैमेज होगा। अब अगर मैं यहाँ पे ऑन करूं, ये मैंने स्टार्ट किया, ये इसमें से एयर निकलना शुरू होगी रेड में से, लेकिन ये ब्लू में से नहीं निकली क्योंकि इसका वाटर डाउन जा रहा है, ये वाटर डाउन गया है। अब ये एयर निकली है, इसका वाटर देर से डाउन गया है। इसको एक तो फिर चेक कर लेते हैं। ये मैंने ऑफ किया, अब दोबारा इसमें वाटर फिल होगा। इस रेड वाले में वाटर स्टार्ट हो गया, इतना फिल हो गया यहां तक, और इस ब्लू में नीचे है। अगर मैं देर तक इसको ऑफ रखूंगा पंप को तो वाटर ज्यादा इन हो जाएगा, इसमें ज्यादा इन हो चुका है, यहां तक आ गया है और इसमें अभी इधर पहुंचा है। और अगर इसी जगह मैं इसको दोबारा ऑन करूं तो रेड में से हमारे बटन ऑन करते ही एयर निकल रही है और ये जो गैप आया है ब्लू में, इसकी वजह से एयर स्टोन ये ठीक नहीं है। अगर मैं इसी एयर स्टोन को लगा रहने दूंगा, ये चलने के बाद तो एयर आ रही है, बबल्स आ रहे हैं, कोई इशू नजर नहीं आ रहा, लेकिन ये बैक लोड डाल रहा है। अब अगर हम पंप पे आए, पंप की अगर हम साउंड सुने
ये पंप की साउंड में एक वाइब्रेशन है। इसमें वाइब्रेशन इस वजह से है क्योंकि ये वाली जो साइड है इस पे ब्लू वाली नोजल लगी हुई है, ये इसके ऊपर लोड डाल रही है। अगर मैं इसको रिमूव कर दूं तो हमारे पंप की साउंड फिनिश हो जाएगी। ये मैंने रिमूव किया पाइप को और यहाँ पे ये साइलेंट हो गया पंप, जो वाइब्रेट कर रहा था वो नहीं कर रहा, अब सिर्फ रेड वाला चल रहा है, ब्लू वाला ओपन कर दिया और ये ब्लू वाले में पानी भरना शुरू हो गया दोबारा। इसको दोबारा कनेक्ट करते हैं। ये जैसे ही मैं इसको कनेक्ट करूंगा ये पंप की साउंड चेंज हो गई है और ये थोड़ी देर के बाद एयर आई है इसमें। इसलिए समटाइम्स आफ्टर 1 और 2 डेज के बाद या डेली अगर आप चेक करते रहेंगे अपने सिस्टम को तो आपको आइडिया रहेगा कि कोई चोकिंग है या नहीं। अगर मैं इनको बंद करूं, ये बार्स और 2 स्पंज फिल्टर और ये, तो ये मैंने ऑफ कर दिए हैं, ये 4 के 4 बंद हो गए। ये जो अब चैंपियन के पंप लगे हुए हैं ये उनके ऊपर लगे हुए हैं। अब अगर मैं यहाँ पे ऑन करूंगा एयर को तो हम देखेंगे कि एयर बार, ये 2 स्पंज और ये वाली एयर बार, ये क्विकली ऑन होंगे जैसे ही मैं पावर को ऑन करूंगा। इवन के इनके पाइप लेंथ 5 फीट है, इससे लेंथ ज्यादा है, लेकिन इनमें चोकिंग नहीं है। अगर इसमें चोकिंग होगी, कोई प्रॉब्लम होगा एयर स्टोन में, तो फिर आपकी एयर थोड़ी देर से निकलेगी, तो फिर इस सिचुएशन में पंप की रबर डैमेज होगी। 2-3 मंथ्स में भी चले, ये डिपेंड करता है कि क्या कंडीशन है। अब हम यहाँ पे ऑन करते हैं और फिर देखते हैं कि कितनी देर में एयर आती है। ये मैंने ऑन किया, एयर बार, एयर स्टोन और ये चारों में से फौरन आना शुरू हो गया, कोई डिले नहीं आया। ये ब्लू वाला एयर स्टोन, ये वाला और एक ये वाला, ये मैंने आउटसाइड निकाला है, ये बिल्कुल बेस्ट लग रहा है, जिसमें इसमें कोई इशू नहीं है। अगर हम लाइट ऑन करके देखें ये बिल्कुल ठीक है। ये दोनों एयर स्टोन, ये और ये वाला, ये मेरे स्पंज फिल्टर में लगे हुए थे, लेकिन मैंने ऑब्जर्व किया कि मैं जब एयर ऑन करता हूँ, फीड डालने के टाइम में ऑफ करता था और उसके तकरीबन 7-8 मिनट ऑफ रहती है सर। जब मैं इसको ऑन करता था तो इन दोनों में 2 और 3 सेकंड्स के बाद एयर आती थी, इसलिए मैंने इन दोनों को चेंज किया, इनकी जगह न्यू लगाए और ये दोनों मैंने आउटसाइड रख ली। अब अगर हम यहाँ पे देखें, ये वर्किंग कर रहा है, वैसे लगेगा ये ठीक काम कर रहा है, लेकिन ये पंप पे इंपैक्ट डाल रहा है, पंप लॉन्ग टर्म में डैमेज होगा। ये जो भी हमने वाटर देखा इनसाइड इस पाइप में अप जाता हुआ, ये मैक्सिमम जितनी वाटर टैंक की हाइट होगी वहां तक आएगा, यहाँ तक। और यही रीजन है कि आप देखेंगे मोस्टली फ्रेंड्स या एवरीबॉडी से कि एयर पंप को टैंक से हाइट पे रखना है। अगर मैं इस एयर पंप को यहाँ पे रख दूंगा डाउन साइड पे, तो ये वाटर इस पाइप से ऊपर जाएगा और अगर पंप मेरा डाउन पड़ा है तो उससे बाहर आ जाएगा और वाटर इस जगह पे ड्रॉप होना शुरू हो जाएगा और ये डेंजरस है क्योंकि मेरा टैंक एम्प्टी हो सकता है। इसीलिए हम यहाँ पे मोस्टली इस पंप की आउट पे ये एनआरवी लगाया जाता है, इसको कहते हैं एनआरवी। ये 1 डायरेक्शन में फ्लो करने देता है एयर को या वाटर को। और अगर मैंने ये एनआरवी लगाया हुआ है तो एनआरवी के इस साइड तक तो वाटर आएगा, लेकिन इस साइड पास नहीं होगा। जैसे हम पंप को ऑन करेंगे तो एयर इस साइड से आएगी, वो राइट साइड पे आउट हो जाएगी, और जब हम एयर बंद करेंगे तो वाटर यहाँ पे राइट साइड पे रुक जाएगा, वो लेफ्ट से आउट नहीं होगा। अब मैंने दोनों एयर पंप अप साइड रखे हुए, टैंक से ऊपर रखे हुए, इसलिए मैंने एनआरवी नहीं लगाया हुआ। अगर मेरे पास एयर स्टोन्स में या पंप के आउटसाइड जो भी चीज लगी हुई है पाइप पे, कोई चोकिंग नहीं है, तो नॉर्मली एयर पंप 1 ईयर से ज्यादा वर्क करता है, उसमें कोई इशू नहीं होता। लेकिन आफ्टर 1 ईयर समटाइम्स उसकी जो रबड़ है वो डैमेज हो जाती है ड्यू टू मोर यूज या एम्बिएंट टेम्परेचर की वजह से, एटमॉस्फेयर की वजह से उस पर इफेक्ट आता है और वो क्रैक्स आ जाते हैं उस रबड़ के ऊपर, या उसके जो वाल होते हैं, इन और आउट के स्मॉल वाल होते हैं, वो डैमेज हो जाते हैं। फिर आपको उसको रिपेयर करना पड़ेगा, वो इतना कॉस्टली नहीं है। अभी मैं उस पर बात नहीं करूंगा, उसके ऊपर नेट पे बहुत सारी वीडियो अवेलेबल है। कोई भी मेरा दोस्त प्लास्टिक के वाल बना सकता है और मार्केट से न्यू रबड़ परचेज करके वो पंप को रिपेयर कर सकता है, वेरी इजी। आई होप ये वीडियो किसी दोस्त की हेल्प करेगी। स्टिल अगर कोई मैंने मिस्टेक की हो तो काइंडली कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं, ताकि मैं भी नेक्स्ट टाइम उस पॉइंट्स के ऊपर केयरफुल रहूं। थैंक्स फॉर वाचिंग, टेक केयर, बाय बाय। सैकड़ों फिल्टर में से चुनें और आसानी से बुक करें। आज ही ऐप डाउनलोड करें। मुश्ताक, हाँ क्या हुआ? यार ये माइक्रोवेव खराब हो गया, इसमें से करंट आ रहा है। हाँ ठीक है, सही करा दूंगा। मुश्ताक, हाँ क्या हुआ है? कब से कह रही हूँ ओवन ठीक करवा दो, अब तो करंट लगता है इससे। एक हफ्ते से तुम्हें बोला मैं कि Hello friends, do fishes need oxygen? Let's talk on it. Yes, as we human beings need oxygen for breathe, similarly fishes also need oxygen in water for breathing. Let's talk on this point, how we can add oxygen. We can use different methods. First one,
Very simple, and most of the aquarium people use that one. That is air pump. But the main issue in air pump is the noise. Second option came wave maker. I can use the wave maker to break the tension. Same here is happening. With this wave maker, this oxygen adding problem is solved. But wave maker is too much costly. Everybody cannot purchase this one. So I was trying to find another solution by which I can add oxygen without wave maker and without air pump. As wave maker is costly and air pump creating noise. So for that, if we see this pump, this is RS3002. This is power head. We have seen too many power head in different aquariums. This power head filter have one input here where I can connect this pipe and put it outside the tank. It will take the air and take out from this. So if I can show inside, it has a cut of 45-degree angle. It means if I take this pipe and cut it at 45 degree, then I can do the same thing which is happening inside this power head. And if I use a small pipe from where the water is coming, if water is coming from this side, and if I make a hole at this point, before exit 1 inch or 1.5 inch before, and put this pipe here, angle should be downside. So there will create a vacuum at this point due to water movement in this direction. When water will pass fast from here, it will create a vacuum, and due to this vacuum, air will come inside from atmosphere, and air will come here and it will mix with water and air bubbles will be created. And if I will make this turn like this, then the water will go inside this pipe and come out from here. It means I have to put it in that direction, so water will not go in this pipe, only air will come. And my problem will be solved. Like this, I can add the air in my tank. With power head filter, you will see too much tiny, small micro bubbles, which does not look good in tank. So I don't want to use this option. Every aquarium has one pump that is used as power head, maybe some filter, maybe overhead filter. Any type filtration system have one pump which throw the water in tank. You can say return pump. Similarly, I have here this one. This is NSF 803 35 watt pump. It's giving back the water from here and coming here and falling here. So I think that this option that I have explained here, if I make a pipe like 45-degree angle and put here, it will make air bubbles. So if I use the same concept and put in pipe here like this and connect with that pipe which is coming from my sump filter return pump, then I can make the same bubbles which is coming out in a power head filter. Here I put one regulator to close the air and open the air as per requirement. This bottle I will tell little bit later why I connect this bottle here. When I open this air, I see there is too much bubbles are coming because this pump is 35 watt, its pressure is too much, water flow is 2000 liter per hour. A small air intake can make too much bubbles here. But then I see there are too much tiny small bubbles in my complete tank and I cannot see my fishes. Then I put this bottle here. This is simple 1.5 liter water bottle. I place this bottle here and that air bubbles was falling in this bottle and then water was coming out from this bottle in tank. So air bubbles also added and this small tiny air bubbles are also removed. So my problem solved. Now if I open this, I have closed this air line from this air controller knob. If I open this, then we can see here small air bubbles will start coming here. If I keep it opening, slow increase. Now I have opened full
Now we can see too much air bubbles are coming in this bottle. And if we see here, there is no tiny or small bubbles in my tank. It's same as before. But if I don't use this bottle, you will not see the fishes. All the tank will be full of this small or tiny bubbles. Maybe little bit came, but not too much. With bottle, I was getting best aeration without small tiny bubbles. But there was some problem which I observed after 2 or 3 days. Let's discuss one by one. First one, this small white color fish, this one, when I put the feed, stuck behind that bottle. Second, the some filter water coming from here and falling down at this point. Without bottle, it was falling straight down and it was helping Wavemaker to move the waste this side to the some filter inlet point. But when I connect the bottle, the water was coming out from top of the bottle. So the sport of water finished. Next, the bottle does not look good. So I plan to put a box here at this point. But the same point, water will come in that box and come out from that box top. That's why I don't want to put hair box. That will do the same. That will not support the Wavemaker to move the waste towards that side. Then I did too much experiments and try to find the best result. That I took this 1-inch dia pipe because this sun filter return pipe is 3 by 4 inch. If I will use 3 by 4 inch same dia pipe here, then I have to move this pipe, air intake pipe, which I have connected this one at the end. I have already explained that this airline pipe should be connected before 1 inch or 1.5 inch where the water is exiting. If I will connect 3 by 4 inch pipe here, then the length will increase. So I have to move this pipe at this place. If I will move this pipe at this place, airline pipe, then here again small teeny micro bubbles produce. So I put this pipe here. This is loose in that. If I show here, this is 3 by 4 inch pipe. This is 1 inch pipe and it's loose. Here too much gap. It means it will not airtight. If you will take 1 inch elbow from sanitary shop, that will be heavy and big in size. This is electrical wiring elbow. I take this one 1 inch and put in front of this and then I put here. And with this glass sucker, I connect this one at this place. Now air bubbles are coming from here, coming down, and at this place, micro and big, all air bubbles collect together and come out and become big. Then my tank is without small air bubbles. And my all problems solved. And second, when I give the feed, one small white color fish, this one, stuck behind that bottle. That was dangerous. Now it's okay because I have gap between the glass and this pipe. Now the water coming out from here, it was helping the Wavemaker to throw the waste towards some filter intake. I can bring this pipe till here, but as Wavemaker will do the section and it will throw all the air bubbles inside tank. That's why I move it up, but still water is falling here and air is going upward. I fix this pipe here tightly because if this pipe will go down below this water level inside the tank, then air bubble will stop. And if it come out and go below this water level, then water will come out. That can be dangerous. Before I connect here air regulator, but as I open the regulator full, that's why I remove this one. This airline pipe can be connected anywhere, like if I have some filter downside or top filter or any power head filter. Now I shall observe 3-4 days at least. Maybe this will increase the oxygen level in water. If oxygen level will increase, then the fishes will get white transparent bubble on eyes. This is called transparent eye bubble disease. So I need to reduce the air. Now if fishes will go on top surface, it means oxygen is less. I need to increase the air more. Hope this video will help someone. Still, if I did something wrong, then please tell me in comments so that I can make it correct. Thanks for watching. Take care. Bye-bye. Hello friends, in aquarium hobby, you must need an air pump for aeration or to add oxygen in tank water. But if power failure, then this is a big problem, how to add oxygen in tank because your pump will not run.
For that, I modify the pump which we normally use and convert it to run on 12 volt DC battery. This is that pump. Now I connect these two pipes and connect one air bar, this one blue color air bar and one air stone. Now if I connect its power supply, 12 volt is connected already, and if I connect the ground, then it will start. Yes, air stone start, air bubble start. If I show from the far, its air is too much. I can't believe the result of this pump. At this time, the pump is running at slow speed. If I increase the speed from this switch, now it's fast, full speed. And here we can see the bar and air stone, too much air. And now if I check its current, its DC ampere meter, let's make it 0. Yes, now it's 0. And here is the positive supply. Its current is 0.36, or I can say 0.4 ampere. With 0.4 ampere and 12 volt, it becomes 4.8, or let's say 5 watt. With 5 watt, this much aeration or this much air is too much. If you will see normal pump which run on 220 volt, 5 watt or 10 watt, that air is very less. I have one that running behind this one. This is 5 watt pump. Its air is very less as compared to this. This air bar is full of air. This air stone is full of air. And with this current, this battery 12 volt 4Ah, this is motorcycle battery. This battery can run minimum 3 hours. So this is too much time. And also this pump I can use in my car if I want to transport some fishes anywhere. Then I can use this lighter place and connect this terminals with that to run the pump. To make 12 volt air pump, first we need normal air pump which we use in aquarium, which is around 220 volt. For that I have this one SP780 model number. Here is one transformer, 2 magnet, this one air rubbers to make the air pressure on both nozzles, this one and this one. The same one I have here. I have taken out transformer from here. This one, let's take its measurements. We have to measure this length and this width. For this, if I put here at 10 mm and it's 15 mm is width, and for the this side, if I take, this is exactly same 15 mm. It means 15 mm by 15 mm is the area. I have to open this very carefully. I have to press this one, lock, this lock. I pressed carefully and then I can open this lock, and now I can take out this bobbin, we say this black color plastic box. Now first I will remove this 220 volt AC winding because I don't need this one. I have to round 12 volt winding. I brought 30 gauge 20 gram wire and round it here. This is the starting point, and after 250 turns that 20 gram wire finish and I take out this 1 point. Then I brought another 20 gram same 30 number wire and start from here, and then that finish at 500 turns. Between this I have taken 1 point 350 just to check when I will use this with the circuit what will be the best result at which point, then that point I will pick. I will use this circuit. This circuit have Arduino chip. I don't need this chip here. This is just I have placed here. I made this 555 IC anti-stable vibrator circuit with MOSFET. This is positive common supply which I will connect on this starting point, where I will connect the ground that will come from this MOSFET IRF830. This is that wire. Now I have connected ampere meter at 0 DC ampere and also connected the air bubbles. Now if I connect here this negative wire on this first point 250 turns here, pump started, air bubbles start coming on both nozzle
and at this time current is 0.79 or 0.8 ampere it's taking. Now if I go on 350 tons, here I connect the ground, same air pump started, but the current is little bit down, 0.5 ampere. And if I connect at 500 tons, here same pump is running, almost air pressure is the same, but the current is 0.33. It means 500 tons point is okay. On this side air is coming more and this side air is coming little bit less. This less air is due to this rubber issue. This is maybe old, that's why this is not giving more air, but that's working. This is the first option, that I have used positive voltage at starting point and then the ground voltage at 250, 350 and 500 tons, only 2 wire. Now I want to check this with 3 wire system, where I will connect the positive in center and on both sides I will make same number of tons, 250 and 500. Then I will see what will be the result, which one is best, then we will choose that one. Now coil is ready. Before I was using 30 number wire, but that was difficult to complete on this bobbin because bobbin size was small. So I changed from 30 to 32 number and round 600 turn, then common point this blue one, and then again 600. This is the old one, single ground, this one MOSFET I have connected, and then this blue wire I have connected with positive, this one 12 volt, and only one coil I have connected, and current is 3.5 amps because 600 tons are used. Air is okay, but if I connect the second one, this MOSFET I have still opened, keep. Now if I connect this one, there is a significant change in air bubbles. If I open this, air bubbles reduce. If I connect this one, air bubbles increase too much. But here the current remain 0.3 amps like before. It means with center tape transformer we have achieved the best result. Here I observe one more point. This blue is common point center. So I connect red wire, and this black one, if I connect here, it gives us 14.6 or 7 ohm resistance, 14.1 ohm. And from the center point, if I come to this last point, it will give us 17.5 or 17.6, 17.5. Start coil, center point, end point. 600 tons, 600 tons. Both resistance will be equal. But in actual case, the bobbin, when we start the rounding of wire, at that time bobbin remain empty. So the circle of the inner side dia is small. After 600 tons, when we reach at this point, after that, there are 600 tons on the bobbin. And from here, when we start next loop, the length of the loop will be increased if I give 600 round, because the dia of the circle is increased. That's why at this point, I can give 560 round, then the length and resistance will be same. Need to consider this point if any friend want to make this one, but still it will work, no issue. Here I have used 32 gauge wire, total weight was 60 gram. This transformer was working best, but still I was trying to make the resistance equal on both sides. First option to open this and remove the turns from the upper winding. Then there was second option, I open the tape from back side and rub little bit wire from here like this, and then check the resistance at this point. But it was very close to 17. Then I check another 1 point, then I check another 1 point. Very careful because wire is very thin. If little bit pull, it can break. Then I have to open the transformer. So thanks God, I can find this wire from here where I can find the close resistance. So this blue wire is at red wire of meter, and this black, if I connect on first point where I can get 14 ohm resistance. This was my first loop, 14.3.
and then this was second one. Here I was getting 17 ohm, and here I find this point and connect this yellow wire. At this point I can get 14.8, very close to loop 1. 14.6. After taking out the loop, now I have again connected back the transformer and airs are coming best. At this time the current is 0.26. Here is the summary of the turn ratio. Before 600 and 600 turn, resistance was 14.5 and 17.5. Here the current was 0.31 amps and here the current was 0.36 amps. So I take out the loop from here, 14.6 ohm. This loop I have taken out approximately 540 turns. And at this loop, the current alone was 0.36, very close to this one, first one. Then I connect this and this loop and leave this one. Here, this one is 17.5 ohm resistance loop. Last point, I don't use this one. And this wire I have taken out from bottom. This was near about 14.6 ohm. And now the both windings have the same resistance. And if I run both, the total current is near about 0.3 and wattage 12 volt multiply 0.3, 3.6 watt is the total wattage of this pump, and air is too much. Now if I make again or any friend make, then he don't need this loop, only round 540 round on upper layer and then take out the loop or discuss with any other person who has the expertise on transformer. Now both sides are equal, then both MOSFET have the same temperature. Before the first one was getting more temperature because its resistance was 14 and the second was little bit cool because its resistance was 17 ohm. Now both are same but still cool, no need of heat sink. To increase or decrease the air pressure, I need to change the frequency of this 555 timer multi-vibrator. For that I have connected here some VR. I will change this one and then we see. At this time 49 hertz or 50 hertz are running and current is 0.38 amperes. At 50 hertz is maximum frequency for this iron core and maximum pressure. If I reduce the frequency from this potential, then we see what will be the result. Reducing the frequency 48, 47, and at this time the current is 0.36, 0.35. I am still reducing the frequency and air bubbles reduced. Frequency is 37, 36. Now if I reduce more with other potential, because I have two potential 1K, because I don't have 2 kilo ohm one potential. Now we observe here air is very less at 32 hertz, but the current is 0.46 ampere current increase. Reason of that, at this time the transistor remain on more time at low frequency, and with this diode is to make the duty cycle 50%. That's why half time on, half time off. And here this green color LED start on off. I can see this because frequency is low. So if I go below 30 hertz, then this transistor or MOSFET become hot as current increase to 0.5 ampere near about, and maybe this core also become hot. So I will increase the frequency again 45 and with the second potential. Now if I increase the frequency till 49 hertz, its maximum frequency and maximum air pressure, and current again came back to 0.4 or 0.38. Now if I increase the frequency a little bit more, then we see what will happen. Now frequency still increase, transformer sound change 60 hertz. After 63 or 64 hertz, we observe that air pressure finish. Even transformer is still vibrating little bit, but air pressure finish. Because the iron core work best on 50 hertz. So I have to adjust here this potential, maximum 50 hertz, then I can achieve the best result. Also the current increase 0.47, but air was not more. After getting final setting, I will make this fixed resistance at proper value. Then I can make this potential at minimum, at maximum. The minimum frequency will be at 30 hertz
and maximum will be at 50 hertz. We brought this motorcycle battery, 12 volt, 4 ampere per hour. And now current is 0.49 or 0.5 ampere because frequency is 34. That's why this light start blinking. The reason of that, I don't have 2K volume. That's why I use a fixed resistance and a switch to increase or decrease the air pressure. Now if I press this switch, then it will make 50 hertz. Yes. 54 hertz or 55 hertz. This wire is little bit loose. That's why little problem. Now frequency 54 hertz, air pressure maximum, and current is 0.35, which already we have checked. During R&D, when I was making this circuit on this project board, there was no component damage, no issue, no problem. But when I make this real circuit, then there was big problem, and my 3555 timer IC damage, 2 IRF 520 MOSFET damage, big loss. So the reason was I make the circuit like this. When I make real circuit, then I connect a diode here for reverse protection and give the supply to this transformer. From here, I give the supply to this transformer center point. Maybe this transformer was giving high voltage spikes on back side, and from here that spikes was coming inside this 555 timer, and then it damaged, and then 2 MOSFET also damaged. Then I change MOSFET from IRF 520 to IRF 3710, and available with me was 3710. This was also working, this was also working, anyone can take. Then I modify the diode. After that, this circuit worked proper, because in this project board, I did not use the reverse protection diode, and it was working best from last 3-4 days. But when I connect this diode, too much problem came. Then I modify this and connect diode here. And before diode, I give the supply to this transformer. Also connect a FR107 fast recovery diode. IN4007 can also be used, but this is fast, so I use this one because high switching is happening here. And this FR107 can damage if I connect the reverse supply. So very careful while connecting this 12 volt supply. I connect red color for positive supply and black color for negative supply. So there is very less chance to reverse the power. Is 2 MOSFET. This transistor is to invert the signal. When this will be high, this transistor will on. At time, this transistor will off this MOSFET. So it will become flip-flop. This will on, this will off, this will on, this will off, alternatingly. 555 timer IC. At this point, this diode is for duty cycle. If I connect this diode, it will make 50% duty cycle. High and low signal will be nearly equal. This R2 resistance, I will make the frequency high or low. That's why I break it in 2 parts, and here I explain this R2 equal to RA plus RB, RA equal to 1.2K. This is the fixed resistance. With this resistance, I will get 50 hertz signal, and if I increase this RB, 2K will be added in this series, and then I can get minimum 30 hertz. But at this time, I don't available 2 kilo volume. That's why I use this one, RB equal to 1.5K. Instead of VR, I use 1.5K and connect a switch here. This one is that switch. This will short the 1.5K connected here. And then the resistance only 1.2K will remain. When I will open the switch, then it will become total 2.7K and frequency reduced to 34 hertz and pressure become less. And when I will close this switch, it will short and frequency will be 50 hertz and air pressure will be more. Here I have red color power LED which indicates that power on. This is 25 volt 470 microfarad filter capacitor. And then this is green color LED on this MOSFET drain. When frequency will be high, then it remain on because I cannot see the it's on off. But when it will be at 30 hertz, then it remain on off. I can see it's blinking. And this second MOSFET also have one yellow LED, but I don't use this yellow LED on my board
I have only one green color LED. Board size is 2-inch length and 1-inch width. It's very small, but I try to complete all the components here because I have to fit this one here, so I cannot make it big one. I shall paste all necessary pictures, circuit diagram and detail in a folder and paste its link in description. If anyone want to see, he can download and see. Still, if I did something wrong, then he can tell me in comments. I will also try to make it correct. Hope this video will help someone. Thanks for watching. Take care. Bye bye.